सर इंडिया में सर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है और इसके सर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? You see, the criminal justice in India is a very hot topic nowadays. आजकल जो क्राइम हो रहे हैं तो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन इंडिया एंड हाउ इट वर्क्स. You see, there are four pillars of criminal justice in India. Number one is the courts authority. Number two is the police authorities. Number three is the prosecution. And number four is the prison. Now let us go one by one. Firstly comes the police authority. Whenever a crime is established and it has been commenced by any mischievous element in the country, so first and foremost authority is the police authority who will take the cognizance of the same, register an FIR, and then they file their investigation report, which is the charge sheet. That is the detail and summary of the what was the incident and narration of the entire criminal happening in that area. Now the second comes is the prosecution. Now the prosecution, the work of the prosecution is to, in the courts, they have to establish the crime beyond any reasonable doubt. So they will produce the evidences, record the witnesses, और उसके बाद वो सारी की सारे जो है प्रोसेस फॉलो करेंगे, so that we can prove the case beyond any reasonable doubt and to establish that yes, crime was committed, it was committed by this person and such heinous has been acted, and all those proceedings has to be informed to the court. Now the work of the court starts thereafter. The court will record each and every evidences, will consider the entire facts and circumstances, and based upon the discretion, wisdom and knowledge of the court will thereafter pronounce the judgment. Now the judgment might have two parts. One is the acquittal and second one is the conviction. यानी या तो छोड़ देगी, acquit कर देगी, या फिर जो है उसको convict कर देगी. And four, तो सबको ही पता है, प्रिजन. अगर आपका कन्विक्शन हो गया या आप अंडर ट्रायल हैं तो इन सच इवेंचुअलिटी रिफॉर्मेटिव प्रिजन में आप जाएंगे और प्रिजन में भी पूरी एफर्ट्स करे जाएंगे फॉर द रिफॉर्मेटिव मेजर्स ऑफ द पर्सन. यानी कि कैसे कि क्या एफर्ट्स करें आदमी दोबारा क्राइम ना करे, उसके अंदर एक अच्छापन आए, रिफॉर्मेशंस आए, वो वेल इस्टेब्लिश करे लाइफ में और री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लाइफ हो सके. सो दीज आर फोर पिलर्स ऑफ क्राइम, मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन इंडिया.